morning class 12 students. In the first video of the chapter semiconductor devices, we discussed about the basic, what is a semiconductor, why we need to do the doping process, what are dopants. So finally we understand that there are two types of semiconductors, extrinsic semiconductors, and that only we will use in practical life also. One is p-type, another is n-type. In p-type, the majority carriers are holes and minority carriers are electrons. That means holes are more, electrons are less. In n-type, majority carriers are electrons and minority carriers are holes. How we produce a p-type? By doping with a trivalent impurities. How we produce an n-type? By doping with a pentavalent impurity. Okay. Now in this video, we will start with a p-n junction. Now what is a p-n junction and how to produce a p-n junction? Now sometimes we feel like this. We take a p-type semiconductor. We take a n-type semiconductor. That means silicon doped with boron and silicon doped with phosphorus. It becomes n-type. Then we stick them together. It becomes a p-n junction, right? ऐसा नहीं होता है. Stick with a glue or something like that. We stick with a glue and then इसको p और इसको n जोड़ दिया. It becomes a p-n junction. No, this is totally wrong. We don't create p-n junction diode like that. Clear? Because why? Because p-n junction diode are connected to each other in atomic level. There is a diffusion of electrons and holes inside the p-n junction. Atomic level connection होना चाहिए. Atomic level connection cannot be done with a glue and all, because they are, when they connect with the glue, there are small, if you see in a microscopic level, the area of contact is very less. Okay, that is the reason which is written in the notes. So how we produce a p-type semiconductor or p-n junction diode? First we do what? P-type semiconductor ले लो और n-type semiconductor ले लो. Okay, for example, this is a p-type semiconductor, this is a n-type semiconductor. Make them slice करके पतले पतले thin slices बनाओ. These are called wafers. क्या बोलते हैं इसको? Wafers बोलते हैं. Slice बनाओ पतले पतले. Okay. Now what's the job is? Take a slice of p-type semiconductor, or I'm teaching exactly what is in the notes. Let's take a slice of n-type semiconductor. ठीक है? और उसमें तुम क्या करो? बोरोन का एक थिन लेयर डाल दो. थिन लेयर. ओके, डाल दिया बोरोन का. ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी डालना है क्योंकि n के ऊपर p बनाना है मेरे को. ठीक है ना? तब वो p-n जंक्शन बन जाएगा. तो मैंने n-type सेमीकंडक्टर लिया हुआ है, उसके ऊपर एक बोरोन का लेयर बना. Do you understand? और इसको हीट करो. So this thin layer of boron will diffuse inside. Done? And that upper layer now becomes a p-type and lower it was already n-type. Now this becomes a p-n junction. Similarly, what you can do, you can take a n-type. Now you take a p-type और phosphorus का एक thin layer ले लो और heat करो high temperature के साथ. So this phosphorus will diffuse inside, and now phosphorus is pentavalent. Okay, so ऊपर में n-type बन जाएगा, नीचे p-type बन जाएगा. In this way we produce a p-n junction. I hope you understand what is a p-n junction and how we produce it. Okay, we don't stick them together. हम एक n-type सेमीकंडक्टर लेंगे, उसमें ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी डाल के डिफ्यूज करा दो हाई टेम्परेचर से. ओके, n-type लिया, ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी डालो, ऊपर p-type बन जाएगा. p-type लिया, पेंटावेलेंट इंप्योरिटी को डिफ्यूज कर दो, n-type बन जाएगा, and this becomes a p-n junction. Do you understand what is a p-n junction, class? So where these things are written, you go to page number 5. At the down, these things are written. What is a p-n junction? Okay. Now, next is what is a depletion layer. अभी p-n junction बनाने के बाद इसके अंदर बहुत कुछ होता है बेटा. So many things are going on inside it, and finally we come to a diode. First we have a p-n junction. As soon as we make a p-n junction, many things happen inside the p-n junction, and then finally the outcome, the overall outcome becomes a diode. So p-n junction is not a diode. When we make a p-n junction, multiple features or multiple, we can say, incident happen, and then finally we come to a p-n junction diode. So what are those multiple things happening inside it? Those things we'll study one by one. Okay. Now see, we have a p-n junction now. We have produced a p-n junction. That's a सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ.
This is a P and this is N. Like this is the junction. So this is a P type. That means इसमें होल्स ज्यादा होंगे और इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे. इस N टाइप, इसमें इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे, होल्स कम होगा. N टाइप में इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होते हैं, होल्स कम होते हैं. That now, as soon as this is created, what will happen? Listen very carefully what I am trying to say. Something called as diffusion will happen. Now, what is the diffusion? You studied in class 10 biology osmosis. In osmosis, you study what is the diffusion. Diffusion is nothing but movement of particles from higher concentration to lower concentration. Clear? Movement of particles from higher concentration to lower. This is a spontaneous process. You studied in chemistry what is spontaneous and instantaneous process. A process which happens on its own. We don't need to do anything. So whenever anything is highly concentrated somewhere, it will automatically move to the low concentration area. Now see, if I take a PN junction, holes have more concentration in P side and electrons are more concentration in N side. So here, holes will try to go diffuse to N side. Why? Because holes have more concentration here. Here it has less concentration. So holes will try to diffuse to high concentration to low concentration. So यहाँ से यहाँ क्या होगा? Hole diffuse होगा. Okay? और electrons will diffuse from high concentration to low concentration. तो यहाँ से यहाँ तक क्या होगा? Electron diffuse होगा. Okay? Now, ये जो diffuse हो रहा है उसमें होगा क्या? Try to understand. When they diffuse inside, for example, an electron is diffusing here. Okay, so when this electron diffuses to the junction, near the junction, what happens? So this is the P region, this is the N region, this whole thing is the N region, this is the junction. Okay, इसको मैं dark line से बनाऊँ. This is the junction. Near the P region, when the electrons diffuse, they combine with the holes and make a negative ions like this. Okay, and when the holes will diffuse, they combine with electrons and make positive ions here like this. This is called space charge region. This region is called space, where we have charges, immobile charges. These charges, they are not free to move. Okay, so जैसे diffusion हो रहा है, so near the junction, in the P region, near the junction, in the P region, immobile negative ions produced, and near the junction, in the N region, immobile positive ions produced. ठीक है? जहाँ पे N साइड है वहाँ पे इमोबाइल पॉजिटिव चार्ज होगा, जहाँ पे P साइड है इमोबाइल नेगेटिव चार्जेस होगा. Okay, so this space charge region which is created is called as depletion layer. That is the first case. First point, first theory. What is a depletion layer? What is a depletion region? This is a depletion region. Depletion region. Why it is called depletion? Because it is depleted. There is no depleted of immobile charges. Because there are immobile charges. These charges are not free to move. Clear? Okay. अब ये होता कैसे है? ये नेगेटिव आयन कहाँ से आया? ये पॉजिटिव आयन कहाँ से आया बेटा? ओके, तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ गया, जो इलेक्ट्रॉन जो यहाँ से गया, हम बोलते हैं थ्योरी में the holes go that side and it's combined with electron hole combination हुआ and it produces a positive ions. Electron go that side, it combined with hole and it produces a negative ion. Okay, but this is not the actual case. What is happening? When the electron is moving from here to here, that electron has come out from the atom, right? That is a donor atom. इलेक्ट्रॉन दिया उस एटम ने, क्या बोलते हैं उसको? डोनर एटम बोलते हैं. तो एटम पॉजिटिव नहीं हो जाएगा, पॉजिटिव नेचर हो जाएगा. दोज आर दिस पॉजिटिव आयंस, दैट इज डोनर आयंस. और यहां से जो इलेक्ट्रॉन चला गया, तो यहां पे जो इलेक्ट्रॉन यहां से यहां, ओके वन मोर थिंग, यहां पे जो होल्स था उसमें क्या था? वो जो होल्स थे वो क्या थे? एक एटम था जिसमें खाली स्पेस था. ओके, वो जो एटम था वो खाली स्पेस था. उसमें जब एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तो वो एटम नेगेटिवली या पॉजिटिव आयन हो जाएगा. So these are called acceptor ions. Okay, so these are nothing but atoms actually. Okay, atoms. Like for example, हम जो बोल रहे हैं ना, we are saying that holes यहाँ से यहाँ चला गया, it combines with the electron and becomes a negative ion, positive ion. And electron यहाँ से यहाँ चला गया, it combines with hole and becomes a negative ion. This is the writing method. This is not the actual concept what is going on. Okay, let me read the book.
बुक्स में देखो कैसे लिखा हुआ है, तो तुम्हें समझ में आएगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूं. Due to this diffusion in the p region of p-n junction, there is a negative ions fixed in the position in the crystal lattice, and near the junction in the n region of p-n junction there are positive ions. In the n region there are positive ions which are called donor ions. Okay, fixed in the position of the crystal lattice. Hence the negative ions near the junction is okay. So notes में नहीं लिखा हुआ है कि actual में क्या हो रहा है, and we don't need to write also in the notes. Okay, we don't need to go right, but you need to understand actually what is happening. Simply we say, theoretically we say, the electrons diffuse from n region to p region, they combine with the holes near the junction and they produce a negative ions. Okay, that is, these are called acceptor ions because they accepting the electron. Do you understand? And in the n, near the junction in the n region, the holes combine with the electrons and okay, they form a positive ions. These are called donor ions. Why? Because we have given the electron. So actually what is happening, यहाँ पे जो atoms है, उस atoms में से जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जाएगा तो atoms क्या बन जाएगा बेटा, पॉजिटिव बन जाएगा, वो है ये पॉजिटिव आयंस. एक्चुअल थिंकिंग प्रोसेस इज दिस. और वो जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ गया, वो जो दूसरे एटम में चला गया, then those atoms becomes negative ion. Okay, so this region where we have immobile charges is called as depletion layer. इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम depletion layer बोलते हैं, or also we can say depletion region. Okay, it has certain thickness. That the data is given to you, which I don't remember, 0 point something micrometer, 0.5 micrometer. That is called depletion layer or depletion region. And the width of the depletion region, the width W, this W is similar to 0.5 micrometer. So I hope you understand how a depletion layer or depletion region is created. Okay. So again I am telling you what is happening. As soon as we have a p-n junction diode, not diode, p-n junction, there is a difference in the concentration of holes and electrons on both sides of the junction. Holes concentration in the p region is more, hence it will diffuse to the n region, and the electron concentration in the n region is more, hence they will diffuse to the p region. During this diffusion, what happens? During this diffusion of holes from p to n region, near the junction in the n side, immobile positive ions created, and during the near the junction in the p side, immobile negative ions created. This space charge region, space बन गया एक तो जहाँ पे immobile charges था, okay, near the junction is called as depletion region. Clear? You understand? Now, next is what is junction barrier or barrier potential. अब यहाँ पे जॉब खत्म नहीं हुआ बेटा, इट्स कंटिन्यू. ओके, अब क्या क्या होगा ध्यान से सुनो. सी, मैं कंटिन्यूशन यहीं से करूंगा. वी अंडरस्टैंड व्हाट इज द डिप्लीशन पीरियड. सो अगेन स्टार्ट विद द इनिशियली. वी हैव अ p-n junction. Due to the concentration difference, diffusion of majority carriers happening. The majority carriers of holes diffuse from p to n region. The majority carrier electrons diffuse from n to p region. Because of that, because of these diffusions, there is space charge region is created near the junction where we have positive and negative ions. Now, this diffusion of majority carriers produces a diffusion current. तो क्या हो रहा है सबसे पहले? स्टेप 1 स्टेप 2 में लिखा हुआ, मैं उसको फ्लोचार्ट में बना रहा हूं. डिफ्यूजन ऑफ मेजॉरिटी कैरियर्स, ओके, प्रोड्यूसेस डिप्लीशन रीजन, and this diffusion of majority carriers is called as diffusion current. इसी को हम diffusion current बोलते हैं, ID. तो सबसे पहले diffusion current प्रोड्यूस होता है. Okay, now next, see nicely, due to this depletion region, charge separation created across the junction. Okay, junction के दोनों तरफ एक charge separation create हुआ. Now can I say, since a charge separation is created, एक electric field create हो जाएगा. देखो, an electric field is created from positive to negative side.
So electric field created from N to P side, that is positive immobile charges to negative immobile charges, and electric field is created. That is called junction field. क्या बोलते हैं? Okay. So this leads to junction field. ये क्या कर रहा है? एक जंक्शन फील्ड क्रिएट कर रहा है. ओके. नाउ पहले ही देखो ध्यान से ना, होल्स इधर जा रहे थे, इलेक्ट्रॉन्स इधर जा रहा था. अब क्या हो रहा है? दैट वाज मेजॉरिटी कैरियर फ्लो कर रहा था पहले जब मैंने पीएन जंक्शन बनाया था. मेजॉरिटी कैरियर्स फ्लो करते ही डिप्लीशन रीजन क्रिएट हो गया, चार्ज सेपरेशन क्रिएट हो गया. चार्ज सेपरेशन क्रिएट होते ही एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो गया. नाउ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज डूइंग समथिंग एक्स्ट्रा. व्हाट इज दैट? These positive charges try to attract the minority carriers now. Electrons उधर की तरफ attract करेगा. And these negative charges try to attract the minority carriers, that is holes from N region. Now minority carriers diffusion create हो रहा है. तो अब यहाँ पे this is called drifting. Due to electric field, the movement of minority carriers जो इसको बोलते हैं drifting. तो यहाँ पे क्या हो रहा है? Hole drifting. होल ड्रिफ्ट हो रहा है और यहां से यहां तक इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट हो रहा है. देखो यहां से पहले होल डिफ्यूज हो रहा था, अब इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट हो रहा है. यहां इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज हो रहा था, अब होल्स ड्रिफ्ट हो रहा है. सो दिस इज कॉल्ड ड्रिफ्टिंग, एंड बिकॉज ऑफ दैट ड्रिफ्ट करंट इज प्रोड्यूस्ड. ओके. सो लीड्स टू जंक्शन व्हिच लीड्स टू व्हाट? ड्रिफ्टिंग ऑफ माइनॉरिटी कैरियर्स. ये क्या कर रहा है? माइनॉरिटी कैरियर्स प्रोड्यूस कर रहा है. which current? Which produce drifting current, idea. Clear? And try to see nicely. The drifting current and diffusion current are opposite to each other class. See, hose diffusion जहां पे पॉजिटिव चीज चार्ज का मूवमेंट होता है उसी को करंट बोलते हैं. तो दिस इज द डिफ्यूजन करंट. होज ड्रिफ्टिंग, दिस इज द ड्रिफ्टिंग करंट. So drifting current in this direction and diffusion current in this direction. They are opposite to each other. Now what will happen? अब क्या होगा? Now see, initially majority carriers are more. So majority carriers के कारण जो करंट प्रोड्यूस हो रहा है उसको डिफ्यूजन करंट बोलते हैं, डिफ्यूजन के कारण. और माइनॉरिटी carriers के कारण जो करंट प्रोड्यूस हो रहा है उसको ड्रिफ्टिंग करंट बोलते हैं, क्योंकि वो ड्रिफ्ट के कारण हो रहा है, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हो रहा है. So initially drifting current, diffusion current is more than drifting current. So initially diffusion current is more than drifting current because majority carriers are more. But as soon as more and more diffusion will create, diffusion ज्यादा से ज्यादा होते रहेगा धीरे धीरे, स्पेस चार्ज रीजन बढ़ता जाएगा. क्योंकि ये स्पेस चार्ज रीजन क्रिएट कैसे हुआ? जितना ज्यादा डिफ्यूज किया उतना कॉम्बिनेशन हुआ और ये आयंस क्रिएट हुए. क्लियर? तो जैसे डिफ्यूजन बढ़ेगा स्पेस चार्ज रीजन क्रिएट बढ़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ बढ़ेगा. दैट मींस मोर एंड मोर ड्रिफ्टिंग करंट विल इंक्रीज. तो स्लोली क्या होता है? इनिशियली ड्रिफ्टिंग करंट बढ़ा है, but after some time, with time, not after some time, with time, drifting current increasing. Okay, टाइम के साथ ड्रिफ्टिंग करंट बढ़ेगा क्योंकि more and more diffusion, space charge region increasing, depletion charges increasing. These charges, immobile charges are increasing, electric field value is increasing, more drifting is happening now, so more drifting current is producing. So there will be one time comes when diffusion current will be equals to drifting current. Okay, clear? And that is called equilibrium state now. Equilibrium state. Now, अब वापस करते हैं, ठीक है? अब मैं एक नया चीज फिर से लिखूंगा जो कि मैं शुरू में नहीं लिखा था. पोटेंशियल कहां से आएगा? See, again I will repeat. First we have a PN junction. As soon as we made a PN junction, how we make a PN junction? We take a p-type semiconductor, उसके ऊपर एक पेंटावेलेंट इंप्योरिटी डालते हैं बिकॉज मुझे n टाइप ऊपर बनाना है. ओके, हाई टेम्परेचर डिफ्यूज कराते हैं तो ऊपर n नीचे p बन गया. सो वी हैव अ PN junction. As soon as we have a PN junction, there is a concentration difference in both the sides. Holes has more concentration in p side, electrons has more concentration n side. Therefore diffusion happens. So holes diffuses from p to n side and electrons diffuse from n to p side. Because of that
diffusion current produced, that is from P to N side. हो गया. Now due to this diffusion, what happens near the junction when an electron go to the P region, it's combined with the atom, okay, which is called as acceptor atom because it's accepting an electron, okay, and produce a immobile negative ions. And near the junction in the N side, there are atoms which accept the holes or which release the electrons. Anyway, okay, that is they are donor ions, and they produce a immobile positive ions, which leads to a depletion region, a space charge region. Okay, now due to this space charge region, there is a charge separation. Okay, there is some charge separation as well as there is some potential difference created, negative positive, इसके अक्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा. इसको हम बोलते हैं जंक्शन पोटेंशियल. क्या बोलते हैं हम इसको? जंक्शन पोटेंशियल. ओके, नाउ इसी जंक्शन पोटेंशियल, इसी के कारण एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्रिएट हुआ था. नाउ दिस थिंग आई एम इंट्रोड्यूसिंग स्पेशल. ओके, leads to junction field and junction potential, we can say like this. Okay, now इसी कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हुआ, which now leads to drifting of minority carriers. The positive immobile charges in the N region try to attract the minority electrons of the P region. The negative immobile charges of the P region try to attract the minority holes of the N region. You don't need to mug up. You have to understand the figure. You can write those statements on your own. Okay. Because of this, drifting current is producing, and the diffusion current and drifting current are opposite to each other. Now, initially the drifting current is more drifting, more diffusion, more majority carriers are there. So majority carriers के diffusion current, diffusion current produce हो रहा है. The diffusion current is more clear. Now, with time, if there is more and more diffusion, this space charge region will increase, which leads to increasing electric field, increasing junction potential. इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ेगा, जंक्शन पोटेंशियल भी बढ़ेगा. अगर जंक्शन पोटेंशियल फिक्स नहीं, धीरे धीरे जंक्शन पोटेंशियल वैल्यू बढ़ेगा. ओके, ड्यू टू विच द ड्रिफ्टिंग करंट आल्सो इंक्रीजेस. ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ गया तो ज्यादा से ज्यादा माइनॉरिटी कैरियर्स को खींचेगा. नाउ देयर विल बी अ टाइम व्हेन डिफ्यूजन करंट एंड ड्रिफ्टिंग करंट बिकम्स इक्वल. ओके, उस टाइम का जो जंक्शन पोटेंशियल होगा, उस टाइम का जो जंक्शन पोटेंशियल होगा, उसको हम बोलेंगे बैरियर पोटेंशियल. क्या बोलेंगे हम उसको? बैरियर पोटेंशियल. ओके, एंड एट दिस सिचुएशन all movement of and drifting, all diffusion and drifting stops because both the currents are equal and opposite. No diffusion, no drifting, all stops. Now at this situation, how the p-n junction will look like? This is P, this is N. तो अब मेरे पास जंक्शन में near the P region we have immobile negative ions, near the N region we have immobile positive ions, and here we have electrons with a hole, here we have holes more, electronless. Now this p-n junction where this is called barrier potential, negative positive, VB, barrier potential बोलते हैं इसको. Now this is called p-n junction diode. इसको हम बोलते हैं p-n junction diode. अब ये डायोड बन गया. ओके क्लास, आई होप यू अंडरस्टैंड कि डायोड कब बना. तो शुरू में डिफ्यूजन हो रहा है, which produces a diffusion current, which creates a depletion region, and that creates an electric field, and that creates a junction potential. Because of electric field, there is a drifting of magnetic carriers that produce a drifting current. Diffusion current and drifting current are opposite to each other. With time, drifting current increases, junction potential increases, electric field increases. There is one time comes when diffusion current and drifting current becomes equal. At that time, whatever the junction potential created, that is only called as barrier potential. Okay, and now all the drifting and diffusion stops. Now that p-n junction becomes p-n junction diode. Okay, so now it becomes a device, a semiconductor device बन गया ये, semiconductor device which is called as diode. Simply diode बोलेंगे और p-n junction diode बोलेंगे और simply we can say junction diode. Okay, so since it's a device,
तो इसका सिंबल क्या होगा? इसका सिंबल ऐसा होता है. दिस इज कॉल्ड पी रीजन, दिस इज कॉल्ड एन रीजन. दिस इज कॉल्ड सिंबल ऑफ अ पीएन जंक्शन डायोड. पी रीजन एरो वाला, दिस इज एन रीजन, नेगेटिव साइड पॉजिटिव साइड. Okay, now this diode has a special characteristics. The current flow only in this direction, towards the arrow. In a diode, the current cannot flow in opposite direction. ऐसा flow कभी नहीं हो सकता. That means a PN junction diode is a unidirectional device. Now, what is a unidirectional device? ये सब कहाँ लिखा हुआ है? पेज नंबर 7 में लिखा हुआ है. ठीक है. तो unidirectional device क्या है? Unidirectional device किसको बोलते हैं? Where the current flow only in one direction. Okay, so you understand when a PN junction becomes PN junction diode. So PN junction में ये सारा चीज on the spot होगा बेटा. होने के बाद finally we come to this condition and then the junction potential creates becomes a barrier potential. Why it is called barrier? Because it stops all the diffusion and drifting. Okay, वो एक potential difference create कर देता है जो diffusion and drifting सबको बंद कर देगा. Clear? And that is called PN junction diode. And it's a device. So it has a symbol. And what is this arrow signify? This arrow signifies the direction of current, the conventional direction of electric current. That the current can flow only from P to N side. N to P side नहीं हो सकता. Clear? Okay. Now in the page number 7, there is some note is written to you. Okay. Under the note, the second point we have discussed. The PN junction at equilibrium state, that is, when the junction potential reaches barrier potential and movement of charge carrier stops, is said to be PN junction diode or semiconductor diode or simply junction diode. एक PN junction diode में जब junction potential barrier potential के बराबर हो जाएगा तब उसको हम diode बोलते हैं. This we discussed. Okay. Now we will discuss the first point. The first point is quite interesting. How we can compare the width of depletion region with respect to the doping. Okay, width जो होता है जंक्शन पोटेंशियल का या बैरियर पोटेंशियल डिप्लीशन रीजन का वो किस पे डिपेंड करता है. ओके, तो ये समझो अच्छे से. हाँ, सो इन द नोट्स इट्स रिटन लाइक दिस. जो विड्थ है बैरियर पोटेंशियल का, नॉट बैरियर पोटेंशियल, वी कैन से डिप्लीशन रीजन का और वी कैन से इलेक्ट्रिक फील्ड का. बैरियर पोटेंशियल बोल सकते हैं. कर दिया हमने. Okay, see, what I'm interested in is the width of depletion region, or we can say strength of junction electric field. Junction field एक ही चीज है. जंक्शन फील्ड का स्ट्रेंथ ये किस पे डिपेंड करता है? It depends on two factors. Type of semiconductor, whether we're dealing with and doping, concentration of doping पे डिपेंड करता है. तो we are interested only in this part. ठीक है, तो ध्यान से समझना मैं क्या बोलना चाह रहा हूं. ठीक है. ओके, सी, मैंने क्या बोला था? ये जो डिप्लीशन रीजन बनता कैसे है? ये इलेक्ट्रॉन यहां गया, दूसरे इसी होल के साथ कंबाइन हुआ और ये नेगेटिव आयन बन गया. ये होल यहां गया, इलेक्ट्रॉन के साथ कंबाइन हुआ और ये पॉजिटिव आयन बन गया. यही होता है ना, राइट? क्लियर? अब अगर इफ डोपिंग इज लेस, इफ द कंसेंट्रेशन ऑफ डोपिंग इज लेस, इसका मतलब क्या? दो फिगर बनाऊंगा मैं. इसमें क्या करते हैं, हम डोपिंग को ज्यादा कर देते हैं और बना देते हैं. चलो, और इसमें क्या करते हैं, ये एन साइड और ये पी साइड ले लेते हैं. ठीक है, यहां डोपिंग कंसंट्रेशन इज मोर, डोपिंग इज मोर. नेक्स्ट आई एम डूइंग डोपिंग इज लेस. अगर मैं डोपिंग लेस कर दूं, ट्राई टू अंडरस्टैंड इट व्हाट आई एम सेइंग क्लास. नहीं तो तुम भी रटा मारना पड़ेगा बेटा. डोपिंग लेस है तो इधर मैं एन बना रहा हूं, इधर पी बना रहा हूं. डोपिंग लेस है मतलब क्या? ऐसा होगा, कम है. ठीक है ना? ओके, अब जब भी इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जाएगा, वेट क्लास. Okay, class. Now see, when the doping is more,
when the doping concentration is more, when this electron will diffuse here, it don't have to cover a long distance, because since there are more concentrations here, that means holes are available in a shorter distance only. Very close to junction also the holes are available. तो वो कम डिस्टेंस पे जाके नेगेटिव आयंस बना देगा, ठीक है ना, कम डिस्टेंस पे जाके. क्लियर? लेकिन जब डोपिंग लेस होगा तो इलेक्ट्रॉन्स को काफी दूर जाके, ये जंक्शन से काफी दूर में जाके होल्स मिलेंगे and they will make negative ions. So what will happen when the doping is less, depletion region का width बढ़ जाता है. When the doping is more, depletion region का width घट जाता है. Clear? यही चीज लिखा हुआ बेटा. See, if you don't understand the book language, let me read the book language. If the doping concentration is N and P side is small, the diffusion electrons and holes, the electron which is diffusing, कहाँ लिखा हुआ है, can move to a larger distance before suffering collision with another hole or electron to be recombined. Due to this, the width is large. Width बढ़ गया, क्योंकि अगर diffusion कम है, अगर doping कम है, तो जो इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज कर रहा है उसको दूर में जाके एक होल मिलेगा पी रीजन में. तो जो आयंस प्रोड्यूस हुआ काफी दूर में प्रोड्यूस हुआ जंक्शन से. But if the doping concentration is more, the electron need to carry a small distance. Then only he will find a hole to recombine. So here the width is less, here the width is more. So when the width is less, electric field is more. When the width is less, electric field is less. Width is more. तो अगर width छोटा है तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ भी बढ़ जाएगा. And that is written out here. When the width is large, junction field is small. तो ज्यादा डिस्टेंस हो गया तो जंक्शन फील्ड भी कम हो जाएगा. And this way we can say how the width of the junction diode is compared with the doping process. You understand, class? I hope you understand what is depletion region. So we understand how a PN junction diode is produced. Okay? Okay, so we understand that PN junction diode is a device. It's a semiconductor device. इसको हम device बोलते हैं, right? जिसका सिंबल क्या है, ऐसा है. This is P type, this is N type. Done? So whenever we connect a device to a circuit, तो उसको कैसे कनेक्ट करेंगे? तो डायोड को सर्किट में कनेक्ट करने का दो तरीका है, which is called as biasing. That is connecting the diode to a circuit. Okay? दो टाइप का होता है. Two ways we can bias a diode. One is called as forward bias. The next one is called as reverse bias. Now, the thing which is written in a book that will not help you. The thing which is written in the notes will help you to understand the conceptual problems. Okay? See, what is the meaning of forward bias? The book statement say if the positive part of the diode is connected with positive terminal and the negative part of the diode is connected with the negative terminal of the battery, then that is called forward bias. But what I am saying, this is not the correct way to identify. If the positive part is connected with high potential and the negative part is connected with low potential, then that is called forward bias. But if the positive part, this is P chart, is connected with low potential and the negative part is connected with high potential, then that is called reverse bias. From there you may face a question. पहले पूछते थे, okay, like for example, ऐसा बोल दिया गया है, ground and this is plus 2 volt और minus 1 volt, ठीक है? नहीं, plus 2 volt ही ले लें, चलो. Now see, ground, this is ground and this is plus 2 volt. Ground is considered as 0 volt, which we studied in the first chapter. So this is 0 volt, this is plus 2 volt. So P is connected with 0 volt and N is connected with plus 2 volt. 0 volt बड़ा है कि 2 volt बड़ा है? 2 volt बड़ा है. That means high potential is connected with negative terminal and low potential is connected with positive terminal. That means this is reverse biased. Clear? Similarly, if I say like this, plus 5 volt, plus 2 volt. Now see, in both the cases we have plus potential. So if we study the book language, one is connected with plus, one is connected with negative, that is not the
correct thing. We cannot find these questions. We cannot solve these questions. So अब तुम check करो. The P type is connected with plus 5 volt and the N type is connected with plus 2 volt. And plus 5 is more than plus 2. That means this is high potential, this is low potential. So it is forward bias. So the P type should be connected with high potential and the N type should be connected with low potential. That is called as forward biasing. Okay, now let's talk about this. Minus 5 volt, minus 2 volt. अब देखो. Now both are negative potentials. But positive part is connected with minus 5 volt and negative part is connected with minus 2 volt. So minus 5 volt is less than minus 2 volt. So this is high potential and this is low potential. So this is what? Reverse biased. Minus 2 बड़ा होता है भाई. Okay, negative में negative number छोटा number बड़ा होता है. So this there are total 6 to 7 examples that are given. So please check out those things. Okay. So this is the way how we can connect a diode to a circuit. A diode to a battery or a source. So we understand a diode is connected in two ways. One is called as forward bias, other is called as reverse bias. Now, what is the next case? The next topic is that we need to understand how the charge carriers flow in case of a forward biasing and in case of a reverse biasing. The topic is page number 7. Explanation of current flow across PN junction in forward bias. And then in page number 8. Explanation of current flow across PN junction in reverse bias. ठीक है, तो इन चीजों को मेरे को समझना है. Let me see what is the time in this video. Okay, so let's talk about current flow in forward bias. So try to understand. Forward bias में current flow कैसे होता है? First you make a PN junction. तभी तुम्हें ये junction हो गया. This is P side, this is N side, and this is the depletion region. Okay, तो P side में नेगेटिव आयंस होंगे, बना दिया. N side में पॉजिटिव आयंस होंगे, बना दिया. होल्स यहाँ पे होंगे, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे होंगे, यहाँ पे मैग्नेटिक कैरियर इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे मैग्नेटिक कैरियर होल्स. Now this is connected with the forward bias. मतलब the P side should be connected with positive terminal and the N side should be connected with negative terminal. हो गया. ओके, अब तुम्हें क्या समझना है? करंट फ्लो कैसे होता है, बस ये समझना है. ठीक है ना? नाउ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. दिस इज द फॉरवर्ड पोटेंशियल. As soon as we connect a PN junction diode with the forward biasing, what is the forward potential we are giving? V. And see, यहाँ पे बेरियर पोटेंशियल है VB, and they are opposite to each other. Positive part connected with the negative terminal, negative part connected with positive terminal. That means the barrier potential will decrease now. Clear? समझ में आया? Barrier potential घट जाएगा, which is written in the page number 7 at the end. Okay, तो पहले barrier potential VB था, अब barrier potential VB minus V हो जाएगा. Okay, so barrier potential decreases. So as soon as we connect a PN junction diode with a forward potential, it opposes the barrier potential, which leads to decrease in barrier potential, which leads to decrease in the thickness of depletion region, and hence junction resistance decreases. ये जो एक PN junction diode जो बना था, oh my god my dog, ये जो PN junction diode बना था, barrier potential is that potential where all the movement of charge carrier stops because there was some resistance created across the junction, which was stopping the diffusions, right? Which was stopping the diffusions. Okay, class, मैंने अपने कुत्ते को भगा दिया. So first thing is that barrier potential decreases. Next, depletion layer, depletion thickness, depletion region thickness decreases. Thickness घटेगा. Okay, and next is junction resistance decreases. So सबसे पहले ये तीन चीज होने वाला है, क्योंकि वो बेरियर पोटेंशियल को अगेंस्ट कर रहा है. सी, बेरियर पोटेंशियल को सपोर्ट नहीं कर रहा कि ऑपोजिट टर्मिनल्स है, तो बेरियर पोटेंशियल के अगेंस्ट काम करेगा, तो बेरियर पोटेंशियल घटेगा, डिप्लीशन रीजन का थिकनेस घटेगा एंड रेजिस्टेंस घटेगा, जो रेजिस्टेंस रोक रहा था पहले डिफ्यूजन को. ओके, नाउ व्हाट विल हैपन? सी, द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी एंड द होल्स इन द P region, this is plus, so they will repel. Repulsive force लगेगा.
Okay, and the negative terminal of the battery and the electrons in the n region, again they will repel. So what will happen? This forward potential will again initiate majority carriers diffusion. Clear? क्या करेगा ये? Majority carriers diffusion को help करेगा. Do you understand, class? Okay, तो इसके कारण जैसे majority carriers diffusion होने लगे, again the current starts flowing. आगे पहले क्या था? करंट फ्लो नहीं हो रहा था. क्यों नहीं हो रहा था? क्योंकि जंक्शन डायड में एक बेरियर पोटेंशियल क्रिएट हो गया था जो कि ऑल डिफ्यूजन्स को रोक रहा था. अब इस फॉरवर्ड पोटेंशियल ने क्या किया? इस फॉरवर्ड पोटेंशियल बेरियर पोटेंशियल को हटा दिया, डिप्लेशन रीजन का थिकनेस घटा दिया, ओके, जंक्शन रेजिस्टेंस घटा दिया, एंड इट इज इनिशिएटिंग, इट इज क्रिएटिंग अ रिपल्सिव फोर्स टू द मेजॉरिटी कैरियर्स एंड अलाउइंग द मेजॉरिटी कैरियर्स टू डिफ्यूज थ्रू द जंक्शन अगेन. क्लियर? You understand this, class? So try to read the notes again. Okay? So, see. So you understand why the electrons and holes are again diffusing? Because of this battery terminals. Otherwise they will not diffuse. So this is the way how the forward current starts flowing in a diode. Okay? Now, this diffusion of holes from here to here. This hole diffuses to the N region, where these holes are called minority carriers. So ये जो होल डिफ्यूज हुआ एन रीजन में, ये माइनॉरिटी कैरियर्स था एन रीजन के लिए, और ये जो इलेक्ट्रॉन्स डिफ्यूज हुआ पी रीजन में, ये इलेक्ट्रॉन माइनॉरिटी कैरियर है पी रीजन. दिस इज कॉल्ड माइनॉरिटी कैरियर इंजेक्शंस. मतलब मैं माइनॉरिटी कैरियर्स को इंजेक्ट कर रहा हूं. ओके, इन एन रीजन जो माइनॉरिटी कैरियर उसी को इंजेक्ट कर रहा हूं, फॉर पी रीजन जो माइनॉरिटी कैरियर उसी को इंजेक्ट कर रहा हूं. Okay, so in this way the current flow. So there are two types of current flow in a diode. One is called hole current, other is called electronic current. IH and IE, and together is called as the current in the diode. IE plus IH equals to I. So this is the current flow due to hole, and this is the current flow due to the electron, and the total current is I. Okay, so in this way the current flow in a forward bias. Okay, so again I am repeating what is happening in forward bias, class. सबसे पहले the barrier potential is against the forward potential. In this way the barrier potential decreases. As soon as the barrier potential decreases, the depletion region decreases, depletion thickness decreases, reduction resistance decreases, and the terminals are repelling the majority carriers. Because of that, again it's initiate the diffusion of holes and electrons, and that leads to the current flow. Now we will go to the how the current flow in reverse bias. Okay, now see, we'll go for current flow in reverse bias. So again make a p-n junction diode. The same figure will draw again. This is p type, this is n type. तो ये हो गया तुम्हारा डिप्लेशन रीजन. n साइड में पॉजिटिव इनमोबाइल आयंस होंगे और p साइड में नेगेटिव इनमोबाइल आयंस होंगे. ठीक है, यहाँ पे होगा होल्स इस तरीके से, यहाँ पे होगा इलेक्ट्रॉन्स इस तरीके से. ओके, नाउ p should be connected with the negative terminal and n should be connected with the positive terminal. This is called reverse bias. The p side connected with negative, the n side connected with positive. Now see, the first thing what will happen, see the barrier potential, it is supporting the barrier potential. इसका मतलब क्या? पहले barrier potential VB था, तो इसको मैं ऐसे दिखा दूं. फॉर एग्जाम्पल दिस इज VB, तो अब barrier potential क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, VB प्लस B हो जाएगा. इस केस में क्या हो रहा था? पहले VB था, अब क्या हो गया? घट गया, VB माइनस V हो गया. In case of forward bias, but now in reverse bias, the reverse potential V is supporting the barrier potential, so it is increasing the barrier potential. So when it is increasing the barrier potential increases, junction thickness increases, junction thickness बढ़ जाएगा, junction resistance भी बढ़ जाएगा. Clear? Okay, तो सबसे पहला चीज ये चीज, तीन चीज होंगे. Barrier potential increases, it leads to increase in barrier potential. जंक्शन रेजिस्टेंस इंक्रीजेस, बैरियर थिकनेस इंक्रीजेस. ये हेल्प करेगा थिकनेस को बढ़ाने के लिए, क्योंकि बैरियर पोटेंशियल जब बढ़ेगा तो बैरियर थिकनेस भी बढ़ जाएगा अपने. ठीक है, डिप्लेशन रीजन का थिकनेस भी बढ़ जाएगा. एक ये हो गया. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द चार्ज कैरियर्स. व्हाट इज हैपनिंग? सी, दिस नेगेटिव टर्मिनल, earlier the battery terminals were supporting the majority carrier to diffuse, but now this negative terminal will attract the majority carriers towards itself, and this positive terminal will attract the majority carriers electrons in this side.
So what is now happening? This is the extra potential we are giving. That means the electric field we are giving. So this is drifting the what use करना पड़ेगा because electric field काम कर रहा है. This is drifting the magnetic area away from the junction. So there is no current flow. Current flow पूरा बंद हो जाएगा. Okay? मैग्नेटिक एरिया से कारण कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा होगा because it is repelling, it is drifting the holes and electrons away from the junction. But at the same time, this electron is repelling the magnetic areas, negative terminal repelling the negative area, positive terminal repelling. So due to the reverse biasing, it is allowing the magnetic area to inject across or diffuse across the junction, okay, which leads to a reverse current. So the reverse current जो प्रोड्यूस होता है इस डायोड में छोटा सा एक रिवर्स करंट फ्लो होगा जो कि मैग्नेटिक एरिया से कारण होगा, which is done by the reverse potential. तो ये रिवर्स पोटेंशियल मैग्नेटिक एरिया को ऐसे इंजेक्ट कर रहा है, because of that some reverse current is flow. Okay, now ये जो रिवर्स करंट फ्लो होगा ये इस पोटेंशियल पर डिपेंड नहीं करेगा. कैसे? सी देयर आर फिक्स नंबर ऑफ मैग्नेटिक एरियाज. ठीक है, मैं रिवर्स पोटेंशियल को बढ़ा दिया, फॉर एग्जांपल -2 वोल्ट कर दिया, मैग्नेटिक एरियाज इंजेक्ट हो गए एंड वी गॉट सर्टेन रिवर्स करंट. ठीक है ना, 0.5 माइक्रोएम्पियर फॉर एग्जांपल. अब इफ आई इंक्रीज द नेगेटिव पोटेंशियल फर्दर, -5 वोल्ट बढ़ा दिया और ज्यादा बढ़ा दिया, सो मैग्नेटिक एरियाज आर फिक्स्ड. ओके, we cannot increase the magnetic areas, they are very less in amount. So सारे magnetic areas इंजेक्ट हो गए. अब क्या ये रिवर्स करंट बढ़ेगा? No, रिवर्स करंट वैसा ही रह जाएगा क्लास. So what I am trying to say is that the reverse current which flows goes to saturation, थोड़ा सा बढ़ के सैचुरेट हो जाएगा, which will study more detail in characteristics of a diode. Okay, सैचुरेट हो जाएगा मतलब कांस्टेंट हो जाएगा and is independent of reverse potential. Okay, why? Because these magnetic areas are produced by thermal excitation, जो हमने पढ़ा लास्ट वीडियो में. थर्मल एक्साइटेशन में प्रोड्यूस होता है. ठीक है ना, मतलब ये पोटेंशियल पे डिपेंड नहीं करता, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है. तो इफ आई वांट टू इंक्रीज द रिवर्स पोटेंशियल, रिवर्स करंट, ओके, आई नीड टू इंक्रीज द टेम्परेचर. रिवर्स पोटेंशियल से रिवर्स करंट नहीं बढ़ता है, इट बिकम्स सैचुरेटेड. ओके, नाउ इसका मतलब यू अंडरस्टैंड दिस, that the reverse current which is produced by the reverse potential is due to the injection of magnetic areas, and that reverse current is saturated after a certain time. A small time पर saturate हो जाएगा, constant हो जाएगा. Okay, and this does not depend on the reverse potential. जो reverse potential में लगा रहा उस पर डिपेंड नहीं करता है. Now it only depends on the temperature. Why? Because it is a magnetic area. Magnetic areas are produced by temperature, thermal excitation. Okay, next, इसका मतलब क्या? If I continuously increase the reverse potential, कुछ नहीं होगा. होगा, क्या होगा वो जानना बहुत जरूरी है. When I continuously start increasing the reverse potential, now this reverse potential is doing what? Stretching the depletion region. It is stretching the depletion region. See, this plus stretch कर रहा है. So what will happen? There will be one reverse potential comes when bonds near the junctions break. Okay, जंक्शन के अंदर कोवलेंट बॉन्ड सारे ब्रेक हो जाएंगे. तो जैसे कोवलेंट बॉन्ड्स ब्रेक होंगे, कोवलेंट बॉन्ड्स ब्रेक होने के कारण जो कैरियर प्रोड्यूस होता है उसी को तो मैग्नेटिक कैरियर्स बोलते हैं ना, जो थर्मल एक्साइटेशन से हो रहा था पहले. अब क्या हो रहा है? When I continuously increasing the reverse potential, there will be one reverse potential occur which is called as avalanche potential or breakdown potential, where all the bonds near the junction break and lots of magnetic carriers produce. Because of that, reverse current suddenly बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा. Okay, and that will lead to the damage of this diode because of heating. Done? So ऐसा ही किस फॉरवर्ड बायस भी होता है बेटा. फॉरवर्ड ऐसे होता है, जब फॉरवर्ड पोटेंशियल बढ़ाता जाऊंगा धीरे धीरे तो करंट बढ़ते ज्यादा हीट प्रोड्यूस हो जाएगा और डायोड फिर से खराब हो जाएगा. So this happens in both the cases. That's why in page number 9 I have written a note that PN junction diode is highly current sensitive. These things you will study on your own. Just give a read. Remember these things. Okay? कि करंट अगर ज्यादा फ्लो करे डायोड से, चाहे वो रिवर्स बायस में फ्लो करे चाहे वो करंट फॉरवर्ड बायस में फ्लो करे, वो डायोड खराब हो जाता है. वी कैन नॉट अलाउ द डायोड टू होल्ड ऑन द हाई करंट फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम.
Okay, both are they are very current sensitive devices. Okay, so I hope you understand what is the reverse bias. So what we understand overall in forward bias, repeat करते हैं वापस अच्छे से समझने के लिए. In forward bias, what is happening? Forward bias is against the barrier potential. Barrier potential घटा रहा है, ठीक है, barrier potential को घटाता है, junction resistance को घटाता है, depletion region को घटाता है, and the terminals of the voltage is allowing the majority carriers to diffuse through the junction again, which leads to the forward current. हो गया. Then reverse potential में क्या होता है? Reverse biasing में क्या हो रहा है? It is supporting the barrier potential. That means the barrier potential is increasing. Clear? When the barrier potential is increasing, the junction resistance is increasing, the depletion region thickness is increasing, and the terminals are drifting away the majority carriers from the junction. That means there is no current flow for the majority carriers. Majority carriers को diffuse करने देगा ही नहीं. But at the same time, these terminals of the reverse potential are allowing the minority carriers to inject to the junction. That means there is a small amount of current flowing, which is called as reverse current, and that current is due to minority carriers flow. Now we know any current which is minority carrier flow, it does not depend on the voltage. Reverse voltage को depend नहीं करता because there are fixed numbers of minority carriers. So that means reverse current goes to saturation after a small time. But if I continuously increase the reverse potential, there will be one potential which is called as brittle potential, also called as avalanche potential, where all the bonds near the junction break, and this breaking of bonds always produces a minority carriers. We know this thing. Bonds break होने के कारण जो carriers produce होते हैं उसको minority carriers बोलते हैं, right? So there is a large number of minority carriers produced, which leads to abruptly increase in the reverse current, and which will damage the tap. Okay, class. So this was the current flow condition, how the currents flow in reverse bias and forward bias. इसी को हम अभी सर्किट के फॉर्म में पढ़ेंगे. That will become characteristics of a diode. Okay, जिसको हम बोलते हैं, this question always comes in boards where they will not ask you how the current flow in reverse bias and forward bias. लेकिन इसी चीज को समझने के बाद ही we can write the characteristics of a diode. Diode के characteristics कैसे निकालते हैं, ठीक है ना? How to find the character. So if I say characteristics of a diode, that means what? When I connect a diode to a circuit, if I change the potential, how the current will change? That means the VI curve. The IV characteristics is called as characteristics of a diode. How the current varies with respect to the potential, that is called characteristics of a diode. So when we connect a diode to a circuit, we can connect it in two ways. One is called forward bias, and one is called reverse bias. So we have two types of characteristics. एक बोलते हैं forward bias characteristics, एक को बोलते हैं reverse bias characteristics. तो forward biasing में डायोड में क्या क्या हो रहा है, करंट कैसे बढ़ेगा वो देखना है. रिवर्स बायसिंग में करंट कैसे बढ़ेगा वो देखना है. ओके क्लास, सो लेट्स गो फॉर दैट टॉपिक नाउ. Okay class, this last topic of this video, characteristics of a diode. What is the characteristics of a diode? That is variation of I versus V. How the current change with respect to potential. That means IV curve. IV curve क्या होगा? मैं अगर potential को change करूँ across the diode, how the current flowing through the diode is changing. That is called characteristics of a diode. That means we need to connect a diode with a circuit. अब डायोड को सर्किट में कनेक्ट करने का दो तरीका होता है. एक होता है फॉरवर्ड बायसिंग, एक होता है रिवर्स बायसिंग. तो one we will have forward bias characteristics separately, one we will have reverse bias characteristics separately. Now the question is, you don't need to mark up the circuit diagram, you have to use the common sense to understand the need of circuit components. मैं जो सर्किट बनाऊंगा उसका कौन कौन सा कंपोनेंट का जरूरत है मुझे, that you need to understand. Okay, अब तुम मेरे सोचो, मैं एक डायोड को डायरेक्टली एक बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया तो क्या इससे मैं कैरेक्टरिस्टिक्स निकाल सकता हूं? क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक्स में मुझे पोटेंशियल अक्रॉस द डायोड को चेंज करना है कंटिन्यूसली. अलग अलग पोटेंशियल देना है डायोड को. डू यू अंडरस्टैंड? सो अलग अलग पोटेंशियल जब देना पड़ेगा डायोड को, तो मैं डायरेक्टली एक बैटरी लगाऊंगा तो काम आएगा नहीं. सो वी हैव टू अप्लाई अ वेरिएबल बैटरी. तो उसको या तो ऐसा दिखाते हैं और या तो रियोस्टेट लगा देंगे हम. रियोस्टेट को बैटरी के साथ लगा दो ऐसे करके, एंड देन यू कनेक्ट लाइक दिस. सो आइदर यू शो दिस और यू शो दिस इन द notes figure. This is shown, but what I will say, instead of making this circuit, you can simply make a cell, put an arrow like this so that it becomes a variable battery. So you have to understand, we need a variable source. पहला चीज
सोर्स मेरा वेरिएबल होना चाहिए सो दैट वी कैन चेंज द पोटेंशियल अक्रॉस द डायोड, देन ओनली वी कैन फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक्स। पहला, दूसरा हो गया, वो जो पोटेंशियल सप्लाई किया मैंने डायोड में, वो पोटेंशियल तो मेजर भी करना पड़ेगा ना मेरे को। क्लियर? दैट मीन्स वी नीड अ वोल्ट मीटर अक्रॉस डायोड। What we need? We need a voltmeter across that. Then only we can measure the potential difference across the diode. Now, how to connect a voltmeter? ये डायोड है, ये मैंने एक बैटरी के साथ लगा दिया फॉर एग्जाम्पल, तो वोल्टमीटर ऑलवेज पैरेलल में कनेक्टेड होता है ऐसे करके। अब टर्मिनल कैसे पता करेंगे? सो सी, फॉर फाइंडिंग द टर्मिनल ऑफ वोल्टमीटर, डोंट सी द डायोड टर्मिनल, सी द बैटरी टर्मिनल, प्लस विथ प्लस, माइनस विथ माइनस। ओके, नेक्स्ट we need current value passing through the diode. तो मुझे डायोड से कितना करंट फ्लो हो रहा है वो दिखेगा आंख से नहीं, वो मेजर करना पड़ेगा। दैट मीन्स वी नीड एन एमीटर। ओके, एमीटर चाहिए, तो एमीटर कैसे लगाएंगे? विच इज कनेक्टेड इन सीरीज, सीरीज में लगेगा, और ये कनेक्टेड इन पैरेलल होता है, कनेक्टेड इन पैरेलल। तो सीरीज में कैसे लगेगा एमीटर? ये रहा मेरा डायोड, ये रहा मेरा बैटरी। तो अब एमीटर लगाने के लिए दो तरीका है। ओके, अगर हाई करंट फ्लो कर रहा हो तो हम मिली एम्पेयर का एमीटर लगाते हैं, और अगर लो करंट फ्लो कर रहा हो तो माइक्रो एम्पेयर का एमीटर लगाते हैं। ठीक है, तो अगर ये फॉरवर्ड बायस है, ये फॉरवर्ड बायस करंट मेजॉरिटी के लिए करंट फ्लो होता है, तो करंट हाई होगा, तो मिली एम्पेयर लगाना पड़ेगा। तो वो कैसे लगाएंगे? मिली एम्पेयर। हो गया। नाउ टर्मिनल क्या होगा? प्लस ऑफ द बैटरी, प्लस। ओके, जरूरी नहीं है कि यही फ्लो लगे, यू कैन कनेक्ट द एमीटर दिस साइड आल्सो, दैट आल्सो वी कैन डू। तो कब क्या होगा? नेगेटिव ऑफ द बैटरी कनेक्टेड विद द नेगेटिव टर्मिनल, मतलब लाइट टर्म सेम साथ लगेगा, लाइट टर्मिनल सेम लगेंगे। सो दिस इज द नीड ऑफ सर्किट कॉम्प्लेक्स। सो व्हाट वी अंडरस्टैंड इज दैट वी नीड अ वेरिएबल सोर्स, वी नीड अ वोल्टमीटर एंड वी नीड एन एमीटर। चलो पहले फॉरवर्ड बायस कैरेक्टरिस्टिक्स का सर्किट बनाते हैं। वी हैव अ डायोड, we should be connected with a source, a variable source। हो गया, लगा दिया मैंने वेरिएबल सोर्स। बुक ने ऐसा नहीं किया, बुक ने डायोड लगाया। सो व्हाई टू यूज दैट कॉन्सेप्ट? नेक्स्ट, प्लस इज कनेक्टेड विद प्लस, दैट मींस इज फॉरवर्ड बायस। नेक्स्ट, वी नीड अ वोल्टमीटर टू check the potential across the diode. So plus, 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 minus, minus. And then we need a ammeter to measure the current flowing through the diode. So this is a forward bias milliampere, plus with a plus, minus. Circuit is done. Now, what is the forward bias characteristics? IV graph is the forward bias characteristics. Clear? तो IV graph होता क्या है? पहले धीरे धीरे बढ़ाओ, ओके, एक पोटेंशियल आएगा, उसके बाद इसको लीनियर कर दो, ओम्स लॉ। पहले धीरे धीरे बढ़ेगा, शुरू में लीनियर नहीं होगा, स्ट्रेट नहीं होगा, पहले धीरे धीरे बढ़ेगा करंट, उसके बाद ऐसा। नाउ दिस इज द forward bias characteristics. Now what are the things we will explain? That is written in the notes. Whatever I have taught you earlier, वही चीज लिखना है। सबसे पहला, forward bias में क्या होता है? Forward bias current is due to magnetic areas, therefore high current flow. That means the current will be measured in milliampere. हो गया, done. Next, let me see what are the points, because I want to not explain randomly first point, second point. Okay, सबसे पहले क्या बोला गया है? That is almost linear. Why almost linear? Because after some time it becomes linear. Linear means what? V proportional to I. V बढ़ाऊंगा तो I बढ़ेगा. Almost linear, not linear. Almost linear. Next, जो मैंने बोला, the current is due to magnetic areas, hence the current is high value and measured in milliampere. हो गया. Third case, when the forward potential is zero, this is the forward potential, this is the forward current. When the forward potential is zero, the forward current is also zero. I can see from the graph only. Fourth point is very important. This is that initially, with a greater increase in forward potential, there is a small increase in forward current. पहले पोटेंशियल ज्यादा बढ़ा, देखो पोटेंशियल बढ़ा ज्यादा, लेकिन करंट कितना कम हुआ है? करंट इंक्रीज इज लेस, potential increase is more. Initially, with a greater increase in potential, there is small increase in forward current. And after a special potential, after a particular value of forward potential, that is called as knee voltage or threshold voltage.
After this knee voltage, the current varies linearly with potential. Linearly. जितना मैं करंट पोटेंशियल बढ़ाऊंगा उतना ही करंट भी बढ़ेगा. ओके, दिस इज द फॉरवर्ड बायस कैरेक्टरिस्टिक्स क्लास. ओके, ना ऐसा क्यों होता है? ट्राई टू अंडरस्टैंड. ये नोट्स मैंने लिखा है तो समझो. ये जो नी पोटेंशियल ये है क्या? मान लो मैंने डायोड लिया, फॉर एग्जांपल एक जर्मेनियम डायोड, एक सिलिकॉन डायोड लिया जिसका बेरियर पोटेंशियल का वैल्यू है 1.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर एग्जांपल. ठीक है ना, दिस इज द एनर्जी गैप ना. वेट फॉर सम टाइम क्लास, एग्जैक्ट डेटा तो मुझे याद नहीं है. आई थिंक 0.6 वोल्ट होता है का 1.2 वोल्ट होता है. ओके, सो लेट्स टेक अ पर्टिकुलर वैल्यू. लेट फॉर एग्जांपल इट इज 0.6 वोल्ट फॉर एग्जांपल और 1.2 वोल्ट. मैंने 1.2 वोल्ट का एक डायोड ले लिया, ठीक है, जिसका बेरियर पोटेंशियल है 1.2. बेरियर पोटेंशियल 1.2, ठीक है ना. और जब मैं फॉरवर्ड बायस लगा रहा हूं तो बेरियर पोटेंशियल ऐसा हो जाएगा, माइनस हो जाएगा. ओके, तो 1.2 माइनस 0, 1.2 माइनस 1, 0.1, 1.2 माइनस 0.5, ऐसे करते 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 क्या 1.2 माइनस 1.2 आएगा. तो जब ये फॉरवर्ड पोटेंशियल बढ़ेगा धीरे धीरे, दैट इज दिस फॉरवर्ड पोटेंशियल वैल्यू, द टोटल बेरियर पोटेंशियल डिक्रीजेस. ओके, अंडरस्टैंड. तो जब बेरियर पोटेंशियल धीरे धीरे घटेगा तो जंक्शन रेजिस्टेंस भी धीरे धीरे घटता है. तो क्या होगा, यहां से यहां तक जो फॉरवर्ड पोटेंशियल था वो बेरियर पोटेंशियल से कम था. दैट मीन्स यहां से यहां तक कुछ ना कुछ बेरियर पोटेंशियल था. दैट्स व्हाई देयर वाज ऑब्स्ट्रक्शन टू द करंट फ्लो. दैट्स व्हाई द करंट वाज नॉट इंक्रीजिंग टू अ ग्रेटर एक्सटेंट, द एक्सटेंट बाय व्हिच द पोटेंशियल इज इंक्रीजिंग. But as soon as the forward potential is equal to the barrier potential, the barrier potential becomes zero. There is no junction resistance anymore. Okay, there is no junction resistance anymore. There is no obstruction now. It is acting like a conductor now. It is no more a semiconductor now. Okay, then since it is acting like a conductor, so potential बढ़ेगा. So what is this knee voltage? This is knee voltage is nothing but that forward voltage which is equals to barrier potential. Do you understand this? तो नी वोल्टेज कौन सा वोल्टेज है? वो वोल्टेज है बैटरी का जो बेरियर पोटेंशियल के बराबर हो जाएगा. उसके बाद वो लीनियर काम करने लगेगा. सो इतना कुछ नहीं है नोट्स में, हमें लिखना भी नहीं है, हमें सिर्फ कैरेक्टर्स लिखना है. सो विल राइट दिस 4 कैरेक्टर्स. ओके क्लास, नेक्स्ट रिवर्स बायसिंग के बारे में बात करते हैं. रिवर्स बायसिंग में सर्किट कैसा होगा? Positive with connected negative, negative with connected positive, and we need a variable source. हो गया variable source. We need a voltmeter to connect the reverse voltage. So negative with negative, positive with positive. We need a ammeter. So this is a reverse current. Reverse current flows due to magnetic areas. छोटा current होता है. So ये हो गया micro ampere. Negative with negative, positive. Circuit is done. So try to understand the circuit instead of mugging up the circuit class. Okay. Now, what is the reverse bias characteristics? So reverse bias characteristics कैसे बनाएंगे? For example, this is the reverse. This was the forward potential. So this is the reverse potential, and this is the forward current. This is the reverse current. ऊपर में forward current, forward potential, reverse current. तो initially क्या होता है? There is no current due to magnetic areas. There is a small value of current that flow into magnetic areas. So when the current is flowing into magnetic areas, that means the current is very low value and it's measured in microampere. And the IV characteristic is not linear at all. इसमें almost linear था, यहाँ पे not linear at all. Okay. Next, that small reverse current which flows due to magnetic areas थोड़ा बड़ा and becomes saturated. Okay, constant हो जाएगा. देखो इनिशियली थोड़ा सा रिवर्स पोटेंशियल दिया, थोड़ा सा रिवर्स करंट बढ़ा, एंड देन सैचुरेट हो गया, रिवर्स करंट कांस्टेंट हो गया. दो इट इज नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ द रिवर्स पोटेंशियल. रिवर्स पोटेंशियल बढ़ा रहा हूं तो रिवर्स करंट कांस्टेंट है. ऐसे करते 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 देयर विल बी वन रिवर्स पोटेंशियल ऑकर्स which is called breakdown potential or avalanche potential, where what happens, we know all the bonds break,
lots of magnetic areas produced, and apparently the reverse current increases to high value. So this is a reverse bias characteristics. Clear class? Okay, so we understand what is the forward bias characteristics, what is the reverse bias characteristics. अब अगर कोई एक मार्क्स में बोल दे ड्रॉ VI कैरेक्टरिस्टिक्स, सिर्फ VI कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ करने बोला, वी डोंट नीड टू एक्सप्लेन, तो या तो तुम अलग से ये दोनों फिगर बनाओ और या तो तुम एक ही फिगर में बना सकते हो ऐसे. ओके, दिखा दोगे दिस इज फॉरवर्ड करंट, फॉरवर्ड पोटेंशियल, फॉरवर्ड करंट, रिवर्स पोटेंशियल, रिवर्स करंट, एक ही में दिखा दोगे. ये ऐसे करके फिर लीनियर हो गया और ये ऐसे करके कांस्टेंट होने के बाद सैचुरेट हो गया, सैचुरेट होने के बाद abruptly increase हो गया. Okay, so you can show like this also. To both the graphs together in one graph, or you can show differently one graph. Clear class? Now, see, try to understand. Now we'll discuss about the resistance of the diode, because you will face regarding resistance of a diode. ठीक है ना? डायोड के रेजिस्टेंस निकालने का भी कभी कभी क्वेश्चन आता है. सो एक डायोड का दो टाइप का रेजिस्टेंस होता है. नथिंग व्हिच आई एम अबाउट टू डिस्कस इज यू विल फाइंड इन पेज नंबर 10 क्लास. Okay, page number 10. The diode has two types of resistances. How come? Why? Because the diode is following two different nature. You check out the forward biasing. In forward biasing, some part of the diode is not obeying the Ohm's law, but some part of the diode is obeying Ohm's law. That is, it's acting like a conductor. See. ये है फॉरवर्ड बायस. तो VK तक, VK नी वोल्टेज तक नॉन ओमिक है, लेकिन इसके बाद ओमिक है. दैट मीन्स हियर द ग्राफ इज लीनियर, दैट इज V हियर से हियर V इज प्रोपोर्शनल टू I, बट फ्रॉम हियर टू हियर V इज नॉट प्रोपोर्शनल टू I. ओके, दैट मीन्स द डायोड रेजिस्टेंस इज चेंजिंग, it is not constant. In forward bias, it is decreasing. In reverse bias, it is increasing. So what I'm trying to say is that diode has two types of resistance. One is called DC, that is static resistance, where the resistance is not changing. One is called AC, that is dynamic resistance, where the resistance is changing. Okay, so where the resistance is not changing, resistance निकालने का फॉर्मूला V by I है. But when the resistance is changing, resistance निकालने का फॉर्मूला del VI del I है. That means change in potential by change in current लगाना पड़ेगा. So you need to understand why the diode has different types of resistances. क्योंकि देखो यहां से यहां तक डायोड का स्टैटिक रेजिस्टेंस है क्लास. इस रीजन में डायोड का रेजिस्टेंस चेंज होगा, कांस्टेंट होगा, क्योंकि V by I का रेशियो फिक्स होगा. लेकिन यहाँ पे यहां तक डायनेमिक रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस चेंज हो रहा है कंटिन्यूअसली. यहाँ पे तो हर जगह डायनेमिक रेजिस्टेंस होगा. यू अंडरस्टैंड क्लास? ओके, अब इसको हम न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट में पढ़ते हैं ना. No, when we will do the numerical, then I will tell you how to understand whether it's a dynamic resistance or static resistance. Numerical base में फिगर देख के कैसे समझ में आएगा कि डायनेमिक है कि स्टैटिक है. लाइक फॉर एग्जांपल, चलो थोड़ा बहुत बता देते हैं. जहां भी तुम्हें रेजिस्टेंस निकालने बोला है, फॉर एग्जांपल तुम्हें बोला है फाइंड रेजिस्टेंस एट -2 वोल्ट. यहां पे -2 वोल्ट में रेजिस्टेंस निकालने बोला है. ठीक है, तो -2 वोल्ट में जब रेजिस्टेंस बोलेगा तो -2 वोल्ट में पोटेंशियल आगे पीछे ले लो. और लेट्स डू इट सम अदर वे. फॉर एग्जांपल 0.5 माइक्रो एम्पियर जब करंट था तब रेजिस्टेंस कितना था. वेदर इट्स अ डायनेमिक और स्टैटिक दैट इज नॉट मेंशन टू यू. ठीक है ना, रेजिस्टेंस कितना था. तो 0.5 के थोड़ा आगे चले जाओ, थोड़ा पीछे चले जाओ एंड सी वेदर वी हैव अ चेंज इन पोटेंशियल और नॉट. 0.5 के आगे ये रहा, 0.5 के पीछे ये रहा. तो इन केसेस में पोटेंशियल चेंज हो रहा है, तो यू गो फॉर डायनेमिक रेजिस्टेंस. कुछ समझ आ रहा है क्लास? ओके, तो अगर पोटेंशियल जिस पॉइंट में तुम्हें पूछा है, व्हेन वी डू द न्यूमेरिकल देन यू विल अंडरस्टैंड मोर नाइसली. जिस पॉइंट में आपको फॉर द you कैसे होगा क्वेश्चन में, find the resistance of the diode at 2 volt. Find the resistance of the diode at 0.5 microampere. That means the resistance acts at a particular voltage value, at a particular current value.
So for that particular voltage and particular current value, you need to go up and down and you need to see the corresponding values are changing or not. If it is changing, then we'll go for dynamic. If it's not changing, we'll go for static. Basically, this is the idea, class. Okay, so this is the end of this video, and we have lots of other topics there in the syllabus. Okay, so almost more than 50% of the chapter is done, class. Okay, that's all. Thank you very much.